Hello students, welcome to Dayavati Modi Public School. Students, this is your class first English grammar class. Today we are going to learn lesson 11 doing words. So students, let us begin our lesson 11 doing words. Let's read these sentences. Students, let's see the first picture here. What do we see in the first picture? Rising sun is shown in this picture and rise means ऊपर उठना, मतलब रोज सन राइज करता है ना, मतलब ऊपर उठता है. Here rise is our doing word. Okay, let's see the second picture. We see kids are playing. क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं ना. तो प्ले क्या है? प्ले हमारा डूइंग वर्ड है. नाउ लेट्स सी द थर्ड पिक्चर. व्हाट डू वी सी? मून इज शाइनिंग. मून चमक रहा है ना, तो शाइन हमारा डूइंग वर्ड है. शाइन इज आवर डूइंग वर्ड. लेट्स सी द फोर्थ पिक्चर. व्हाट डू वी सी? वी सी A man is reading a newspaper. एक आदमी क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है. So read is our doing word here. Now let's see the fifth picture. We see a driver is driving a bus. ड्राइवर ड्राइव कर रहा है ना कार, यानी चला रहा है. इसका मतलब ड्राइव हमारा डूइंग वर्ड है. ड्राइव इज अ डूइंग वर्ड. लेट्स सी द सिक्स्थ पिक्चर. व्हाट डू वी सी? वी सी अ गर्ल इज वॉकिंग. गर्ल क्या कर रही है? वॉक कर रही है ना, मतलब चल रही है. ओ हियर वॉक इज आवर डूइंग वर्ड. Now let's see the first picture here. We see a dog is barking. मतलब एक कुत्ता बार्क कर रहा है, भौंक रहा है ना. तो बार्क क्या हुआ? हमारा डूइंग वर्ड. बार्क इज आवर डूइंग वर्ड. Now let's see the second picture here. What do we see? We see two girls are talking. यानी वो दोनों गर्ल्स बात कर रहे हैं. ओ टॉक इज आवर डूइंग वर्ड हियर. नाउ लेट्स सी द थर्ड पिक्चर. वी सी अ कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क. मतलब कैट दूध पी रही है. ड्रिंक इज आवर डूइंग वर्ड हियर. द वर्ड्स यू हैव जस्ट रेड आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. तो वर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं, वो सभी वर्ड्स डूइंग वर्ड्स हैं. दे टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स डू. ये सभी वर्ड्स हमें बताते हैं कि लोग, जानवर और चीज़ें क्या करती हैं या फिर क्या कर रही हैं. Now let's do this exercise. Draw lines to match the actions to the doing words. Okay, let's see the first picture. A girl is eating. We will match it with eat. Okay. Now in the second picture we see a boy is bathing. We will match it with bath. Now in the third picture what do we see? We see boy is studying, यानी वो पढ़ रहा है. We will match it with study. Fourth picture we see a boy is running. Run मतलब भागना. So we will match it with run. In the last picture we see a boy is sleeping. ये बच्चा sleep कर रहा है ना, सो रहा है. So we will match it with sleep. Okay students, now let's learn some rules of doing words. There is a rule of doing words which says we do not add s to doing words
when we talk about many peoples, जब भी हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम अपने डूइंग वर्ड में एस नहीं लगाते हैं. And there is an exception here that we consider I and you as plural, means more than one. That's why we do not add s to our doing words when these words come in our sentence. Okay, now let's see these sentences. Here, I like milk. I is considered as plural, that's why we are not using s with our doing word here, that is like. Okay, now see the last sentence here. Mohan and Neena like milk. Mohan and Neena are two people, that's why they are more than one. We are talking about two people, that's why we are not using s with our doing word, that is like. Let's see the sentences at the right side of the page. In these sentences, we are using s with our doing word. Why are we using it? Because in all these sentences, we are talking about one person. Okay, a single person. जब भी हम सेंटेंस में किसी एक इंसान के बारे में बात करेंगे या फिर किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम अपने डूइंग वर्ड में s लगाएंगे. See these examples now. He likes milk. She likes milk. It likes milk. In all these sentences, we are talking about only one person. Okay? One. भी हम किसी एक इंसान के बारे में बात करेंगे, हम अपने डूइंग वर्ड में s लगाएंगे. गायत्री जॉग्स एवरी मॉर्निंग. यहाँ गायत्री एक इंसान है, इसी वजह से हम अपने डूइंग वर्ड में s ऐड करेंगे. जॉग्स. Revati lives in Kochi. Here Revati is singular, means one person, so we are talking about one. We will add s to our doing word lives. Akash and Vikas speak Japanese. Here Akash and Vikas are two people. We will not add s to our doing word and we will write speak. Now let's do this exercise. Underline the doing words. I like lemonade very much. Like is our doing word here, so we will underline it. Second, they listen to music every day is a doing word, so we will underline it. Mr. Smith teaches us English. Teach is a doing word here, we will underline it. My brother talks very fast. Talk is our doing word, we will underline it. Mamta works a lot. Work is our doing word, we will underline it. Okay students, this is all for today and I hope you have understood the doing word. See you in the next class. Thank you.